Good morning, class. Today I'll be starting with the paper Supply Chain Analytics, where I'll be taking the topic problem driven approaches. In the next video, I'll be taking the data driven, and next I'll be taking a case study where I'll be trying to make you understand how, in the real life, real world, actually the companies are using these two approaches in their business decision making. Okay, so now let's first understand that what is the problem driven approach. So basically, one thing you know that these are the approaches to use the data analytics by the business organizations in their decision making. Okay, so you know that the businesses has now evolved from traditional to modern. So traditionally, the businesses were using the problem driven approaches, and many of the organizations nowadays also they use problem driven approaches. So what it is, the name itself says its story. Problem driven means this approach is being used by the organizations. This approach of data analytics being used by the organization when there is some issue or some challenge that the organizations are addressing, they are using the problem driven approach. So the beginning point is there is some specific issue or challenge, and the whole focus is on understanding the problem thoroughly, identifying its causes, and then seeking towards the solutions and interventions to address it. Okay, सो दिस अप्रोच इज अ रिएक्टिव अप्रोच, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है पहले से और उसी को रिजॉल्व करने के लिए ही तो प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच का यूज किया जा रहा है. डेटा एनालिटिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में लाएगी और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी. जैसे ही वो प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा, फटाफट जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच को लीव कर देगी और वो डेटा एनालिटिक्स और ज्यादा यूज नहीं करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हियर आई टेकन द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग कस्टमर चर्न इन अ टेलीकॉम कंपनी. मतलब एक टेलीकॉम कंपनी के अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि एक टेलीकॉम कंपनी के जो कस्टमर्स है ना वो स्विच कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन के कस्टमर्स जो है ना वो स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स जियो. ना वोडाफोन इज फेसिंग द सेल्स इशू, द वोडाफोन इज फेसिंग that there is huge loss and the customers are switching. So in order to like address this particular challenge, the Vodafone is now using the problem driven approach. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर्स जो है स्विच कर रहे हैं, तो इसके लिए वोडाफोन इज यूजिंग द प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच. और इसमें क्या होगा कि वोडाफोन इज फर्स्ट लाइक इट विल बी identifying the problem. What is the problem? The problem is the customers are like switching. Okay. Then what it will be doing is it will be using data analytics. So the data will first be collected through customer feedback, through customer support calls. The feedback will be collected. The patterns will be noticed. Ki, how and when and who are the customers who are switching, whether it is urban or rural or what. Okay, so all the demographic and geographic and all the things will be captured, and the churn patterns will be identified. Okay, so that a common reason can be identified. Okay, so a common reason will be identified for leaving, such as it may be the poor network quality or the high pricing. Then after analyzing this, they'll move to the solution development. So based on the analysis, the targeted solutions are implemented, such as the network infrastructure improvement can be done in particular area of the area which has the poor coverage, or the introduction of more competitive pricing plans can be done. So these can be the solutions, and these solutions will be given only when the organization is using the problem driven approach. तो प्रॉब्लम ड्रिवन अप्रोच में बस इतना ही है कि एक कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इस अप्रोच को यूज कर रही है, वो डेटा एनालिटिक्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रही है और फिर डिसीजन मेकिंग कर रही है. जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है वो और ज्यादा डेटा एनालिसिस अपने बिजनेस में नहीं यूज करेगी. लाइक फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर फीडबैक कलेक्ट हुआ, जो सपोर्ट कॉल्स मिला और जो ये पैटर्न्स वगैरह नोटिस हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर चैलेंज को फेस करने के लिए वोडाफोन ने कलेक्ट किया है. वोडाफोन इसको कंटिन्यू नहीं करेगा. ठीक है,
जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वोडाफोन अब और ज्यादा कस्टमर फीडबैक या ये जो भी डेटा एनालिटिक्स का पार्ट था वो और नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रॉब्लम ड्रिवन। एंड प्रॉब्लम ड्रिवन को इसीलिए तो कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, कि एक बार वो इश्यू आ गया अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है। ओके, so I guess you have understood problem driven. In the next video we'll be trying to understand what is data driven approach. Okay, thank you so much. Bye bye.